It goes through many organizations and everyone has to work in a coordinated manner. ये रिले रेस है. रिले रेस में क्या होता है? Every person of that relay work in a coordinated manner. तभी आप you can win the race. Even if anyone lags behind, the result will be disastrous for everyone. So let's see what is supply chain management. See, here the diagram clearly shows source, make, move, store and sell. So this is the whole supply chain. Supply chain management, it is the management of a network of interconnected businesses involved in the ultimate provision of product and services package required by the end customer. Actually, the whole thing is you are going to satisfy the needs or the demand of the end customer. But to bring that product or service to the end customer, it starts right from the beginning, from where the raw material comes, which has to be changed into, that is source. To start from source. So it is changed into manufactured good. Then manufactured goods have to be delivered. So logistics also plays a very important role. So every player in this relay race has to work in the most optimum manner, so that in this competitive world, you are not the only supply chain. There are so many supply chains who are working. Here it should be a game where everybody wins, everybody gains, win-win situation. So to make that, you have to understand what is the supply chain and why it is important that a coordinated effort has to be taken into account. So what is the basic definition of supply chain management? It is the management of a network of interconnected businesses involved in the ultimate provision of product and service packages required by the end customer. Supply chain management spans all movement and storage of raw materials, work in progress, inventory, and finished good from point of origin to point of consumption. So it is working in a circular manner. Source से ultimate consumer, and then again from it starts all over again. A simple supply chain is made up of several elements that are linked by the movement of products along it. The supply chain starts and ends with the customer. We see here it is the focus should be on the customer. What is the customer's demand? What is its need? Ma'am, I will request if you can adjust little bit front side, because your face is not visible to us. So yeah, maybe background light. Now it's okay. Now it's okay. Now yeah, it is visible. Yeah, it's a better. Yeah. Just 1 second. चलो
अनम्यूट कर लें मैम, अनम्यूट कर लें आप. So a simple supply chain is made up of several elements that are linked by the movement of products. Supply chain starts and ends with the customer. You start with what the customer wants, what is the demand of the customers, and accordingly you procure all the elements and do the necessary work. So the raw material is converted into the finished good or services, and then it is delivered to. So you should also. Yeah, little bit glitches are there because of the network. So you can see the slide. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now these are the 5 different parts of our supply chain. Supplier, operations management comes in this manufacturing sector. So you can see how supply chain management and operations are related together. Because without the operation, the so supplier, manufacturer, then once it has been finished, it has to be distributed to different points from where it can go to the ultimate customer. Supplier, manufacturer, so that is why it is the picture is in that cyclic fan. So supply chain management, you have to plan how to do the whole operation, then from where to get the raw material, how to make from raw material to the finished good, then how to deliver it at 2 different points. And in case something is wrong with your product or service and the customer does not want, he or she should have this option of returning it and get either it in a modified way or maybe the money back or something like that. So that provision should also be there in the supply chain. That is why the return is the last point. Plan, source, make, deliver, return. So here, this is also the same thing. In a cyclic manner, it is showing plan, source, execute, deliver, return. So what is supply chain management? Is the coordination and integration of end-to-end business activities. End-to-end means right from, it is a cyclic, so end-to-end, from source to return, and then again from source to return. Procuring materials and services, transforming them into products or services that respond to market demand. Whatever is the market demand, you have to procure accordingly and satisfy the need and demand of the customers, and delivering them to customers. Even if you make it, I mean, it is not delivered properly, you
objective is not achieved. Success requires developing relationship with partners, because as I told you in the beginning, this is a relay race. So each player in this relay race has to put equal emphasis on his or work, or his or her role in the organization. Success requires developing relationships with partners, managing flows of information, because information also is flowing along with this, and materials, and making keen insight into cash flow and profitability. All these are flowing. Cash is flowing, material is flowing, then information is flowing. So all the partners should be aware of this, how it is flowing, when it is required, whether it is reaching in the right time or not. All this is very important to make the whole supply chain deliver the goods it is trying to deliver. So in this, there is increased competitiveness. Now, we are not only working in a national environment, but in a global environment. Customers are more sophisticated, fast. Market is also changing very fast. Technological innovations influence organization. For example, you take Amazon. Amazon you order online, and if you use their Prime service, it is delivered in a day or two, or maybe sometimes even if you are staying in a place where they have their go down, maybe it is delivered on the same day. So all this possible cannot be possible without the intervention of technology. Technology plays a very major role in achieving your goals. Then for this, you have to make, as I have told you yesterday only, strategic planning, long-term planning. It is the art of creating specific business strategies, implementing them, and regard to a company's overall long-term goals or various desires. So, and accordingly, you will be directing the different functional areas of the organization, such as accounting, finance, marketing, and human resources. So it is the overall strategy. The first thing you're planning is the strategic planning. मैम आई विल रिक्वेस्ट कि आप थोड़ा अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लें, क्योंकि थोड़ा सा ग्लिच आ रहा है. कोई दूसरा नेटवर्क है क्या अपने पास? लिंक इज हेलो. हाँ, नेटवर्क तो है. नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है. इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल. हाँ, तो अगर कोई दूसरा नेटवर्क है, नहीं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. मेरे पास तो यही नेटवर्क है. अभी तक तो ठीक से काम कर रहा था, पता नहीं आज क्या हो गया है. हाँ, मैं भी कुछ रीजन है, कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम. उसी को हो सकता है जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके इसमें कुछ प्रॉब्लम हो. जी, प्लीज कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत. So this is a simple supply chain. Raw material, supplier, from supplier to manufacturer, manufacturer to distributors, from distributors to customer, from customer to final consumer. And now here, suppose they find it something wrong, they should have the option of return also.
So first and foremost is the customer. The customer starts the chain of events when they decide to purchase a product that has been offered for sale by a company. The customer contacts the sales department of the company, which enters the sales order for a specific quantity to be delivered in a specific date. If the product has to be manufactured, the sales order will include the requirement that needs to be fulfilled by the production facility. The whole machinery will start working only when if there is a demand. Either you are creating the demand or there is actual demand, whatever is the reason. If you are not able to sell the product, first thing is the planning. The requirement triggered by the customer's sales order will be combined with other orders. The planning department will create a production plan. कैसे कहाँ से आपको रॉ मटेरियल लेना होगा जो सस्ता भी हो और अच्छा भी हो, उसको कहाँ भेजना पड़ेगा जहाँ वो डिजायर्ड उसका रिजल्ट आपको मिले. Then how it should be distributed to the wholesalers, from wholesalers to retailers, from retailers to customers, maybe from customer. Retailer can be one of your customer, from retailer to the actual consumer. So this cannot be done without planning the whole thing. Haphazardly you cannot do. So smooth flow nahi hoga. There will be a lot of barriers in your way, which will happen your flow of goods and services. Smooth flow hona chahiye, timely flow hona chahiye. That is the ultimate goal of a good supply chain. Then actually once you have planned everything, then you start purchasing the raw material. इसको भी पहले आपको प्लान करना होगा कि कहाँ से करना, कौन सबसे अच्छा, क्योंकि सप्लायर तो बहुत होंगे मार्केट में, टाइमली फुलफिल कर सके, क्वालिटी जो आप चाह रहे हैं वो मिल सके. Then you have to keep the track of the inventory. रॉ मटेरियल आया, कितना यूज हुआ, कितना बचा हुआ है, कब किसकी क्या जरूरत है, whether you are getting it in time or not. जैसे बहुत चीजें ऐसे होते हैं जो you have to keep in store for some time. ऐसा तो नहीं है कि जब जरूरत है तभी. और इन्वेंट्री का क्या मतलब है? You should not keep too much, क्योंकि उसमें कैपिटल आपका लॉक हो गया, उसका इन्वेंट्री का देखभाल भी करना पड़ता है. तो इन्वेंट्री में there are two type of cost, ordering cost and upkeeping cost. तो जैसे मान लीजिए, take a small family only, you buy some of the grains or some of the things which you utilize during the month in bulk. ऐसा नहीं है कि आप जब जरूरत होगा, खाना बनना होगा, तब आप सामान खरीदिएगा. पहले से आप उसको प्लान करते हैं कि अच्छा ठीक है, ये इन चीजों की जरूरत होगी पूरे मंथ में, तो उस तरह से हम सामान खरीद के लाएंगे. पर इतना ज्यादा भी नहीं कर लीजिए कि वो फिर खराब होने लगेगा और आप उसको देखभाल में ही ज्यादा पैसा लग जाए. तो इन्वेंट्री में ये बहुत देखना पड़ता है कि वी कीप द ऑप्टिमम लेवल, कि हमारा जो वर्क है दैट इज ऑल्सो नॉट हैम्पर्ड एंड इट इज नॉट ओवर फिल्ड. स्टोर डिपार्टमेंट इज ओवरफिल्ड, तो अपकीपिंग में ही बहुत पैसा लग जाएगा, बिकॉज मनी, दीज थिंग्स विल एड टू द कॉस्ट ऑफ द अल्टीमेट प्रोडक्ट. Then once you have the inventory, you know what the customer wants, what type of design they want, everything. Then the production starts. Once the production is done, based on production plan, the raw materials are moved inventory to the production area. The finished product ordered by the customer are manufactured using the raw material purchased from suppliers. After the items have been completed and tested, they are stored back in the warehouse prior to the delivery of the customer. जो भी अब आपके पास raw material आ गया है, तो आप जो भी desire है customer का, उस हिसाब से आप उसको प्रोड्यूस करेंगे, अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को वो पूरा प्लान देंगे,
उसको जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है कि किस तरह से वो मटेरियल प्रोडक्ट डिजाइन होगा, उसमें क्या क्या फीचर्स ऐड होंगे, you'll add those features to it, and then once it is, then you test कि properly काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. ऐसा तो electrical appliance, whether it is safe to handle that appliance or not, all these things has to be tested before it goes to the ultimate customer. अल्टीमेट कस्टमर के पहले भी जो रिटेलर है, रिटेलर या होलसेलर के पास भी जाने के पहले you have to do a specific testing on the products so that you can be sure it is providing the service or product which the customer wants. तो ट्रांसपोर्टेशन का भी बहुत बड़ा रोल है सप्लाई चेन में, because without transportation how will it go to the desired customers? Transportation, when the finished product arrives in the warehouse, the shipping department determines the most efficient method to ship the product so that they are delivered on or before the date specified by the customer. When the goods are received by the customer, the company will send an invoice for the delivered products. So it is very necessary कि your transportation system, जो भी आप logistics के means होते हैं, कभी कभी you use your own logistics, sometimes you hire a logistic firm to do the work for you, but actually जो भी यदि उससे भी गलती होगी तो इफेक्ट तो आप पर पड़ेगा ना, क्योंकि you will be delivering the product, the customer is buying the product. So all these things, whoever is playing an important role in this supply chain has to be seen कि they are doing it in the most efficient way. We have already discussed this. This is strategic planning है 3 to 10 years, long term planning. Increase revenue by 10%. जैसा आपका ये एक aim है कि जो अभी मेरा revenue है उसको हम 10% और increase करें. या supply chain configuration, how will the supply chain be formed, किसको क्या करना है. Merger and acquisition, मान लीजिए आप किसी नए फर्म को अपने में मर्ज करना चाहते हैं या किसी दूसरे फर्म को acquire करना चाहते हैं, तो all these type of decisions are strategic, comes under strategic planning. Highly strategic, few broad long term indecisions. जैसे आप हमने कल कहा था कि टाटा मोटर्स ने जब ये डिसाइड किया, when they were producing commercial vehicles, they decided to produce passenger cars. So that was their strategic decision, long term. कि वो अब इस फील्ड में भी आना चाहते हैं पैसेंजर कार का. तो क्या एनवायरनमेंट का डिमांड है, लोग क्या चाहते हैं, किस तरह का डिजाइन चाहते हैं, तो फॉर दैट दे हैव टू डू. तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम इनको हेल्प करता है, दैट इज नोन एज एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम. दिस इज मोर और लेस अनस्ट्रक्चर्ड. उनको दे हैव द इनपुट, उनके पास इंटरनल इनपुट भी होता है, एक्सटर्नल इनपुट भी होता है. in a summarized form. मान लीजिए आप एक होटल खोल रहे हैं, तो होटल में क्या लोगों का ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकता है कि इस जगह में होटल का डिमांड बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं और उनको रहने के लिए अभी जगह की कमी है. तो देयर इज अ डिमांड फॉर अ होटल. तो व्हाट टाइप ऑफ होटल इज रिक्वायर्ड, वो जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनकी पेइंग कैपेबिलिटी क्या है, तो आप उसी तरह का होटल बनाएंगे. तो ये होटल एक उसमें कितने रूम्स होने चाहिए, उसकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, आपको एनवायरनमेंट क्या कह रहा है. तो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज देयर. एंड इफ दे वांट, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जो अब कंप्यूटराइजेशन में ये हो जाता है ना कि इवन इफ यू हैव द समरी बट इट इज हाइपरलिंक विद द डिटेल थिंग. हम लोग सभी लोग यूज करते होंगे, HTML होता है ना, हाइपर टेक्स्ट लिंक रहता है. जैसे मान लीजिए आप किसी समरी को, यू आर गोइंग थ्रू सम समरी,
there's something which you want कि हाँ इसका क्या meaning है, इसके what is the detailed information about that, you just click on it and that will come. So it has to be hyperlink. तो जो top level के executives होते हैं उनके they do the strategic planning, long term planning, and their information system is known as executive support system, which is the summarized information about the internal as well as the external environment in which the organization will be working in future. What is their long-term goal? What they want to achieve overall. Then comes the tactical decision, which is for small. मान लीजिए आप जैसे कहें कि कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तो इसमें सारे फंक्शनल एरियाज इन्वॉल्व होंगे, योर फाइनेंशियल एरिया, योर मार्केटिंग एरिया, योर एचआर एरिया, योर ऑपरेशंस किस तरह से बनेगा, क्या डिजाइन होगा, क्या क्या फीचर्स होंगे, उसमें किस तरह का मटेरियल यूज होगा, ये ऑपरेशंस देखेगा. एंड फाइनेंस विल सी कि फ्रॉम वेयर विल द मनी कम, whether you can finance it in-house, then marketing will say where it will be sold, what is the market. So jab tak aap you don't advertise and tell the market what are your products, what are its features, what are its used in the society, then you will not get a considerable market to sell your products. So all these functional areas, they'll be directed through the strategic planning to work on their particular area, to see that the ultimate product reaches the customer. और ऑपरेशनल हो गया कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को रोज रोज क्या करना है, रोज या एक वीक का, at the lowest level. The operational decision is daily or weekly. Customer order taking, एक एग्जाम्पल है, इट कैन बी कस्टमर ऑर्डर टेकिंग कि वीकली फोरकास्ट क्या होगा, इस वीक में क्या डिमांड होगा. देयर आर सो मेनी मैथमेटिकल वे ऑफ डूइंग दिस. यू हैव द डेटा, तो यू नीड डेटा, कि बिना डेटा का तो आप इंफॉर्मेशन आप प्रोसेस ही नहीं कर सकते हैं. आप ये नहीं जानेंगे कि कितने लोग हैं आपके मार्केट, जो ग्रुप आप जिसको केटर करना चाहते हैं, उनकी क्या डिमांड है, क्या तो on that you make certain forecasting. Then packing list issuance, कैसे पैक होगा, किस तरह से डिलीवर होगा. तो this is the operational planning. So you have from highly strategic to more detailed, specific, short-term decisions. So you can say, to ensure that the supply chain is operating as efficient as possible and generating the highest level of customer satisfaction at the lowest cost. As मैंने हमेशा इस पर हार्प किया है कि क्वालिटी बेस्ट हो मगर कॉस्ट लोवेस्ट. तो इसीलिए आपको यू हैव टू सी कि यू आर डूइंग इट एफिशिएंटली, वेस्टेज कम से कम हो. जहां पर भी आप सेव कर सकते हैं सेव कीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली इट विल add to the cost of the product. And you, in this competitive world, naturally if you get a good product at a lower price, any consumer will go for it. And it is the number of consumers which will decide the profitability. There's a Walmart. Aaj it has become a global organization. मगर एक समय था when they had started in USA, they were selling undergarments, socks, यही सब sell करते थे, and they were selling at a price lower than the market price. इससे उनका demand इतना बढ़ा क्योंकि they were able to generate the profit which they were looking for, क्योंकि नंबर बढ़ गया. अब एक को ही बेच के 10 रुपए कमाइए या 100 को बेच के थोड़ा कम में करिए तो अब हो सकता है 1000 रुपए कमा लेंगे. तो you have to see how you will be capturing the market.
This is just the repetition. Supply chain management has 3 levels of activities that different parts of the company will focus on: strategic, tactical, and operational. It is more in detail. Strategic decisions जो है whole organization, such as the size and location of manufacturing sites, partnership with suppliers, products to be manufactured, and sales market. Strategic network or optimization, including the number, location, size. सबको इस समय आप सब चीज देखेंगे कि आपके कौन कौन पार्टनर होंगे, कहाँ आप उसको भेजिएगा, आपका वेयरहाउस कहाँ होगा, आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स कहाँ होंगे, आप क्या क्या फैसिलिटीज रखेंगे. तो ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि इट इज ओवरऑल strategic partnership with suppliers, distributors and customers. क्योंकि suppliers आपको supply कर रहे हैं raw material या semi finished goods. Distributors आपके product को आपके ultimate customer तक पहुंचा रहे हैं. और communication channels, आप किस तरह से अपने कंज्यूमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने सप्लायर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से कर रहे हैं. योर अल्टीमेट सक्सेस विल डिपेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स. क्रॉस टॉकिंग में करते, जैसे कुछ लोग, कुछ फर्म्स ऐसे होते हैं कि जरूरी नहीं वो खाली एक किसी के सप्लायर होंगे. दे कैन बी सप्लायर ऑफ मेनी. उनके स्पेस ज्यादा है तो शायद 2-3 मैन्युफैक्चरर्स के सप्लायर्स हो सकते हैं. यू कैन डू डायरेक्ट शिपिंग या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स. एक लॉजिस्टिक्स पार्टी होगा जो आपका सप्लाई का करेगा. इट डिपेंड्स व्हाट यू वांट, व्हाट विल बी द अल्टीमेट सक्सेसफुल फॉर योर ओन ऑपरेशन. फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट. हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है. इट इज फर्स्ट जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग या एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. यू आर born, then you grow up, you mature, and then finally you die. तो प्रोडक्ट का भी होता है. तो यू हैव टू प्लान इट. तो जब वो मैच्योर कर गया है, then the demand for that particular product should be the highest. क्योंकि बाद में तो शायद उसकी कोई डिमांड नहीं रहेगी तो बेकार हो जाएगा. तो आपको धीरे धीरे उसको फेज आउट करना पड़ेगा. देखिए कब तक उसका डिमांड है. वो हो सकता है कोई ऐसा कंपटीटर्स आ गया कि जो आपके डिमांड को नीचे कर दिया. तो यू शुड बी proactive to all these changes. You need information technology. ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो इट इज द बाइंडिंग फोर्स. जैसे हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है जो इट कवर्स द होल बॉडी. Information from one organ goes to another organ. Or you take nervous system. The brain controls the whole nervous system. तो आपको पता है कि किस बॉडी के पार्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है. यू टेक प्रिकॉशंस अकॉर्डिंगली, योर एनी मेजर्स अकॉर्डिंगली. तो इसी तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है. इट इज अ सिस्टम which controls the total flow of material, cash, everything in the organization. Aligning overall organizational strategy with the supply strategy. जो organization का strategy है, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि you want कि your product should reach your customer in time at the with the features and the price they want. Then you have tactical decision. This is in ज़्यादा डीपली क्या हुआ वो तो as I told you कि tactical decision is for the functional area. Tactical decision focus
on adopting measures that will produce cost benefits, such as using industry best practices, developing a purchasing strategy with favored suppliers, working with logistic companies to develop cost-effective transportation, and develop warehouse strategies to reduce the cost of storing inventory. तो सबको मिलकर काम करना है ना. The production department will see from where to get the right type of material, raw material, so that that can be transformed into the product which the customer is demanding or which he or she needs. क्या industry का best practices है. That is why benchmarking is so important in for any organization. जो आपसे अच्छा है वो कैसे उस काम को कर रहा है, यदि आप उसको सीखिएगा तो आप you'll be adopting that. आपकी purchasing strategy क्या होनी चाहिए, because suppliers तो बहुत है. You have to see what is the quality, what is the price, what is the delivery time. All these things you have to see. You have to manage the logistics, क्योंकि finally the product is yours. आप ये नहीं कहते कि लॉजिस्टिक ने गड़बड़ कर दिया, नहीं टाइम पर पहुंचाया, आपका नाम खराब होगा ना, आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा. तो ये all these things will be come under tactical decision. Sourcing contracts and other purchasing decisions, product decision, including contracting, scheduling and planning process. क्या process आप use करेंगे to manufacture that particular product. इन्वेंट्री को आप कहाँ स्टोर करेंगे, कितना खरीदेंगे, क्या लोकेशन होगा, क्या क्वालिटी होगा इन्वेंट्री का, ऑल थिंग्स. तो कोई आप जिस भी फंक्शनल एरिया में काम कर रहे हैं, अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम इज टू प्रोड्यूस दैट द डिजायर्ड प्रोडक्ट व्हिच द कस्टमर वांट्स एट द प्राइस व्हिच द कस्टमर कैन अफोर्ड. अब ये तो नहीं है ना कि we have to see the purchasing power of also of the customer. अब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मार्केट, मान लीजिए आप अभी भी मार्केट में चले जाइएगा तो you can see कि there is a demand for very high quality and even low quality, क्योंकि सबके purchasing power एक जैसे नहीं है. तो people who cannot purchase those high quality, they also purchase the similar type of products, but at a lower cost. So you have to produce that type of material. Benchmarking all operations against competitors and implementation of best practices throughout the enterprise. देखिए आपके कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, आप वैसे कर रहे हैं कि उससे अच्छा कर रहे हैं कि उससे खराब कर, क्यों कर रहे हैं. जो पेमेंट्स करना, हर एक माइलस्टोन में पेमेंट्स हो रहा नहीं, योर पार्टनर्स शुड आल्सो बी सैटिस्फाइड. ऑफ फोकस शुड बी ऑन कस्टमर डिमांड. देन लास्ट it comes your operational decisions. Decision at the level are made each day in businesses that affect how the product move along the supply chain. Operational decision involve making schedule changes to production, purchasing agreement. जैसे मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गया, सडनली डिमांड बहुत ज्यादा हो गया, तो कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे आपको. या तो ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करना पड़ेगा, ज्यादा लेबर फोर्स यूज करना पड़ेगा. whoever is in charge is ready for all these emergency changes or not. या बहुत slack हो गया, तो how to face that crisis? स्मूथली जब तक चल रहा है सब चीज जैसे पहले से प्लान तब तक तो ठीक है, बट इन actual production, crisis may arise anytime, anywhere. So one should be prepared for it. Daily
but in case flexible. So minute by minute planning has to be there. Demand planning and forecasting, coordinating the demand forecast of all customers and sharing the forecast with all suppliers. Naturally, आपको पता है कि ये डिमांड है, तो सप्लायर को भी तो it has to be conveyed to him or her कि ये डिमांड है, इस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, तो हमें इस तरह का मटेरियल चाहिए. Ma'am, transparency. Sourcing, planning, including current inventory and in collaboration with all suppliers. Yes. Someone was asking something. ma'am, I was saying that your voice is fluctuating. It is not being clear to us. So there are two types of innovation. One is inbound logistics, one is outbound logistics. Pardon? Inbound logistics जो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आ रहा है, inbound है, which is coming into the production department, जैसे raw material हुआ. Both these, all these will come under the operational, because how the whole organization should operate at the daily level or the weekly level. जब प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ, आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसको करने के लिए डिफरेंट फंक्शनल एरियाज को क्या क्या करना होगा. ये हो गया आपके टैक्टिकल, इसको कितना करना है. Outbound operation including all fulfillment activities, warehousing and transportation to customer, because this is once the product has been made, now it has to be moved to the ultimate customer. Inbound hai, jab raw material hai, it is coming into the operation to be converted into the desired product or service. And outbound ho gaya, jab once it is finished, how it is delivered to the different customers. Order promising, accounting for all constraints in the supply chain, including all suppliers, manufacturing facilities, distribution centers and other customers. तो ये जो day to day points हैं, इसको हम देखते हैं operational level पे. What technology we are using? Organizations increasingly find that they must rely on effective supply chain or network to successfully compete. Okay, competition यहाँ बहुत high है. We are working on a global level in the global market and network economy. Today you are not working in isolation. You are network. आज ये नहीं है जो इकोनॉमी है, यदि रिसेशन एक जगह होता है तो it affects the other places also. We have to keep all this information intact, and people working in these organizations should also know how the economy is moving and how they can achieve the desired result they want. जैसे 1998 में Peter Drucker is a very well-known management guru. He had said
this concept of business relationships extends beyond traditional enterprises boundaries and seeks to organize entire business processes throughout a value chain of multiple companies. Value chain means कि raw material से जो ultimate product बना, तो value has been added. The value of the thing is increasing with every step. And यहाँ एक player नहीं है. There are multiple players. So to achieve this, you will have to invest in technology. जैसे आज अब कोविड में क्या हुआ? People were forced to stay at home, but communication तो रुक नहीं सकता था. भाई जिंदगी तो नहीं रुक सकती थी, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुए उस समय. Through internet, through this communication channel, people started collaborating and working on things, even if they were not meeting physically. जैसे ये आपका classroom ही है. We are not meeting physically, but we are contacting each other, learning from each other. And for this, enterprise resource planning, which is the latest development in information, which has integrated the whole standalone information systems. As I told you, executive support system top most level के लिए है, decision support system middle level के लिए है, और daily के लिए MIS management information operational level के लिए. But now we have integrated all this together in enterprise resource planning, where it uses the information, different modules. जैसे लॉजिस्टिक का एक मॉड्यूल होगा, दूसरा मॉड्यूल आपका प्रोडक्शन का होगा, तीसरा मॉड्यूल फाइनेंस का होगा, मार्केटिंग का होगा. बट ये नहीं है कि मार्केटिंग वाले को कुछ नहीं पता है कि फाइनेंस क्या हो रहा है. There has to be a free flow of information throughout the organization. हो सकता है जो डेटा चाहिए, कितने कस्टमर है, क्या उनकी डिमांड है, क्या उन फीचर्स उनको चाहिए, ये एक जगह कैप्चर हुआ, but then it is shared throughout the organization. क्योंकि जिसको भी काम करना है उसी चीज को फोकस में रख के काम करना है कि कस्टमर सेंट्रिक होना चाहिए. कस्टमर को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, कितने प्राइस में चाहिए, आपके फोकस एरिया क्या है, उसमें आपको क्या करना है. तो this enterprise resource planning integrates all this information and passes the information to the people who need it. For example, Amazon has changed the face of retail through its use of bold supply chain strategies and the deployment of innovative technologies. आज आप किसी Amazon के warehouse को देखिए, जो fulfillment center उन लोग कहते हैं, कि they are using so many different type of machinery, कि so that the customer receives the product he or she has ordered and within the specified period. उनके पास हैंड इतने बड़े-बड़े warehouses हैं. You can go on the net and see कि warehouses कैसे काम कर रहे हैं. उनके अंदर conveyor belts लगे हैं तो fast movement हो सके. Handheld devices होते हैं कि वो जो बारकोड लगे रहते हैं कि कहाँ पर रखा है, भाई इतने बड़े वेयरहाउस में रखा हुआ है कहाँ, तो उसको फट से निकालना तो बहुत मुश्किल है. रिट्रीवल इज आल्सो इम्पोर्टेंट. तो फॉर दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूज्ड so that it can be immediately seen कि where it is kept. जैसे अब हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं. You don't have to store everything on your system. Cloud से you can take it because of this internet technologies.
Instant communication between vendors and customers allows for timely updates of information, which is key in management of supply chain. So now the first one which I had shown was the supply chain. अब ये सिंपल चेन नहीं रह गया, ये इट इज अ नेटवर्क. इसमें आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स है, इट इज अ नेटवर्क. सप्लायर्स भी 3 हैं, इट कैन बी मोर देन दैट. ये इसके सप्लायर है, इसके सप्लायर है, ये फिर इससे यहाँ आया, इससे यहाँ गया, नेटवर्क है. ये भी 2 से 3 से ले रहे हैं, ये भी 3 से ले रहे हैं. Then they are giving it to the manufacturer from an information is something which is binding them together. यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में गया, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से फिर डिमांड में गया. तो दिस इज अ complex supply chain now, and you will not know what the other is doing if that information flow is not fast and reliable. And here technology helps you a lot. So you can see all these partners, whether you are the customer, whether you are the supplier, whether you are the manufacturer, they are integrated together. जैसे हमारे well-being के लिए all our organs are integrated together. ये नहीं है कि हार्ट फंक्शन अपने आप में करेगा, ऐसा नहीं है. या लिवर, it is integrated together for the total well-being of the person. All these organs are related together, and they have to work in such a way that the total well-being of the person is kept in mind. तो यहाँ क्या है, तो आपको फाइनली एक कस्टमर्स को सैटिस्फाई करना है.
तो उसके लिए जितने भी पार्टनर्स हैं और कस्टमर भी इंटीग्रेटेड है, उसको क्या चाहिए यदि ये हमें पता ही नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो ऐसा नहीं है कि ये जो, क्योंकि जो भी हो रहा है वो कस्टमर के लिए हो रहा है, जो भी इतने सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं वो फाइनली क्या है, यू हैव टू सेटिस्फाई द कस्टमर। उनको क्या चाहिए, क्या फीचर्स चाहिए, कितने पैसे में चाहिए, क्या क्वालिटी चाहिए, तो ये सारा चीज तो दे शुड आल्सो बी, उनको ये इंफॉर्मेशन हैज टू कम टू द मैन्युफैक्चरर, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर इट हैज टू गो टू द सप्लायर, तो कोई सेपरेट नहीं है। तो म्यूचुअली शेयरिंग इंफॉर्मेशन, whatever is the demand, how the things are moving। अब तो जो जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू ऑनलाइन आजकल हम लोग जब कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं तो वी कैन ट्रैक दैट ऑर्डर। मान लीजिए रेस्टोरेंट को क्या कि बेटे इट भी अभी कुक हो रहा है, दे फर्स्ट से कि हाँ योर ऑर्डर हैज बीन टेकन, then it says it is being cooked, then it says it is being delivered, you can track it. Why it is possible? Because of the technology and because of the information flow. You know, and they promise you कि अच्छा तो आपको ये चीज 15 मिनट में, 20 मिनट में या 24 मिनट जो भी उनका है टाइमिंग वो होगा। तो the tracking of the whole order, it is due to mutually sharing of information related to the integrated behavior. Mutually sharing information among supply chain members is acquired to implement a supply chain management philosophy, especially for planning and monitoring processes. Continuous information updating among the chain members for effective supply chain management is a must. Information sharing is the willingness to make strategic and tactical data available to other members of the supply chain. अब मान लीजिए कि आपको ये पता ही नहीं है कि कब तक आपका रॉ मटेरियल आएगा, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज अब तो ऐसा है कि इंफॉर्मेशन because of the development in technology, like for example आज से करीब 20-25 साल पहले एक ट्रक आपका सप्लायर, आप ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया है, आपका सप्लाई चला वेस्टर्न साइड, मुंबई से आ रहा है और बंगाल में है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि क्या हो रहा है रास्ते में, यू जस्ट वेटिंग। जैसे हम लोग जब छोटे थे, जब when we used to go to the hostel, हमारे पेरेंट्स को उसी दिन नहीं पता चलता था कि हम ठीक ठाक इंफॉर्मेशन फ्लो इतना इजी नहीं था, इतना फास्ट नहीं। तो इससे अनसर्टेनिटीज, आज तो सबके पास मोबाइल फोन है, तो इमीडिएटली द इंफॉर्मेशन इज पास्ड एंड शेयर्ड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो इसी तरह सप्लाई चेन में भी है, पहुंचा है कितने देर में पहुंचेगा आपके पास, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई, तो दैट हैज टू बी कन्वेड। So accordingly, you have to something like that. You can satisfy your customer through other substitute or through something, or you can explain the problem to the customer. So information flow is possible only due to technology development. जैसे पहले था तो ट्रक चला मुंबई से, उसको मान लो कलकत्ता आना है, कोई पता नहीं है कि कहाँ है आपका ट्रक और किस हालत में है। फिर उसके बाद रास्ते में वो ये सेंटर्स बन गए, बूथ्स बन गए, तो ठीक है आप बूथ में जाके वहां फोन कर सकते हैं,
वो भी कनेक्टिविटी उतना अच्छा नहीं था, धीरे धीरे वो उससे बढ़कर फिर अब तो सबके पास मोबाइल फोन है, और कुछ नहीं तो मोबाइल फोन से ही आप इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम हो गई रास्ते में, कुछ भी हुआ, तो दैट हैज टू, एंड दैट इज व्हाई टुडे वी नो कि व्हाट इज हैपनिंग इन डिफरेंट एरिया ऑफ द ग्लोब, उसी दिन पता चल जाता है। Ma'am, now have the facility of the GPS. Now we track the transport truck by GPS. Yes, Okay. transportation has So become day by- so, it has, Day by day increase the technology has technology. improved in this area also, mechanical area also, it has improved informational area also. इसीलिए आज ये जरूरी नहीं है, जब पहले का था कि स्पेशली हेवी द रॉ मटेरियल वाज देयर, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग दैट रॉ मटेरियल टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाज another problem, but that now has been taken care of with efficient transportation system, and that is why you don't have to have the raw material and the manufacturing in one vicinity. अब तो ग्लोबल भी हो गया है, मे बी मैन्युफैक्चरिंग at one place in one corner of the globe, and then you are sending it to other corner of the globe. Then mutually sharing risks and reward. जो भी प्रॉब्लम्स हैं, ये एक का प्रॉब्लम नहीं है, जो भी पार्टनर्स है सप्लाई चेन में उस सबका प्रॉब्लम है, ये सोच के चलना है। और जो रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं वो सबका रिवॉर्ड है, एक का नहीं है। इट इज नॉट जैसे क्या होता है जनरली, यदि ठीक रहा तो जो वो लीडर रहा वो सारी वाहवाही लूट लेता है, ऐसी बात नहीं है। लीडर का अकेले का कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। तो यू शुड बी इन दिस सप्लाई चेन, इफ यू वांटेड टू हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक दिन के लिए तो नहीं है, आप एक दिन के लिए तो नहीं आए हैं मार्केट में, you want to have a long time presence in the market, and for that you need long term relationship. So with that there should be mutual sharing of risk and rewards. जो रिस्क भी है उसको भी सबको शेयर करना है, और जो रिवॉर्ड है उसको भी सबको शेयर करना है। देन कोऑपरेशन, यदि कोऑपरेशन ही नहीं रहेगा तो क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आप शेयर करेंगे? ठीक है, जब रिस्क रहेगा तो दूसरे के मत्थे रख दल दिया, रिवॉर्ड्स होगा तो अपने मत से। तो ये नहीं है, कोऑपरेशन होना चाहिए, देखिए क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो देयर हैज टू बी अ कोऑपरेशन अमंग द डिफरेंट पार्टनर्स इन द सप्लाई चेन। Cooperation among the supply chain members is required for effective SCM cooperation, reference to similar or complementary coordinated activities performed by firms in a business relationship to produce superior mutual outcome or a singular outcome that are mutually expected every time. Over the time, है ना? So if that cooperation is not there, if you are not cooperating, if the supplier is not cooperating with the manufacturer, if the manufacturer is not cooperating with the distributor, so naturally your performance will be affected. So cooperation is another factor that there, as I have already said, there are 7 factors, which is very important if you want your supply chain to be effective and efficient. Providing the material which the ultimate customer wants. There can be certain things which more than one they might be doing together. So for everything cooperation is needed. Cooperation starts with joint planning and ends with joint control activities. तो ये नहीं है कि कोई सप्लायर जब तक उसको वो मटेरियल नहीं करेगा तो he should, supplier should also be a partner in that planning. जो भी प्लान हो रहा है वो पूरे जितने सप्लाई चेन मैनेजमेंट के पार्टनर्स, they should be open to it, they should know about it. Information has to be shared.
and this information can be shared only if there is cooperation among the partners of the supply chain. अब सप्लाई चेन इन्वेंट्रीज का ही लीजिए, यदि कॉपरेशन नहीं है तो हो सकता है कि किसी कहीं पर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा हो गया, कहीं बहुत कम हो गया, तो इट विल अफेक्ट द सप्लाई चेन. तो एट एवरी लेवल देयर हैज टू बी कोऑपरेशन. तो गोल क्या होना चाहिए कि यू आर सर्विंग द कस्टमर, कस्टमर को दिमाग में रख के. उस सबका वही गोल है. आप सप्लायर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप रिटेलर हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता. फाइनली तो वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास जा रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं है. तो say the same goal and the same focus on serving customers. A supply chain succeeds if all the members of the supply chain have the same goal and the same focus on serving customers. Establishing the same goal and the same focus among supply chain members is a form of policy integration. तो जो भी पॉलिसी बन रहा है, ये नहीं कि आपने कुछ पॉलिसी बनाया, दूसरे ने कुछ, कोई और पार्टनर ने कुछ और पॉलिसी का भी इंटीग्रेशन होना चाहिए. क्योंकि मेन तो आपका एक ही काम चल रहा है ना, वो तो वो चेन है, वो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. अलग अलग नहीं कर सकते आप. इसीलिए ये बातें कही जा रही है कि देयर हैज टू बी इंटीग्रेशन, there has to be cooperation, there has to be sharing of information, there has to be mutual sharing of risk and reward. जो भी हुआ सबके लिए है, एक किसी की वजह से नहीं हुआ. अल्टीमेट जो भी आपने जीता, जो भी अचीव किया, जो भी रिवॉर्ड है, तो that has to be shared with everyone. Similarly, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए तो प्रॉब्लम्स को भी शेयर कीजिए, क्या रिस्क है. इससे ये भी हो जाता है ना कि जो प्रॉब्लम्स है दैट ही कर सकता है. इट इज बेटर टू हैव मोर देन वन माइंड. बहुत सारे आइडियाज निकलेंगे तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, इजिली सॉल्व हो जाएगा. बट at the back of the mind, if these principles are not there in your mind, एक दिन से तो डेवलप नहीं, मैंने शुरू से ही आप ये चीजों को डेवलप करते रहिए. इफ यू आर मूविंग, इफ यू वांट योर सप्लाई चेन टू बी competitive, policy integration is possible if there are compatible cultures and management techniques among the supply chain members. तो उनके जो कल्चर भी होंगे वो एक तरह के होने चाहिए, तभी वो एक इंटीग्रेशन हो सकता है. आपके सोचने का तरीका कुछ और है, हो सकता है आप भी ठीक ही सोच रहे हैं, दूसरा भी ठीक सोच रहा है, बट इफ इट इज नॉट कंपैटिबल, जैसे हम कहते हैं ना कि जो रिलेशनशिप होगा वो फंक्शनल रिलेशनशिप होना चाहिए, डाई फंक्शनल नहीं होना चाहिए. हर एक बात पर मान लीजिए बहस हो रही है और इतना ज्यादा बहस हो रही है कि काम डिले हो जा रहा है, तो इससे अच्छा है कि एक दूसरे की बात सुने, समझे और डिसीजन ले, क्योंकि टाइम इज अ वेरी बिग फैक्टर. अब इतना ज्यादा बहस करने लगे, चाहे कोई पूछ रहा है कोई जवाब नहीं दे रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इससे तनाव बढ़ेगा. इफ देयर इज dysfunctional relationship among the members of the supply chain, partners of the supply chain, it will affect the ultimate result of the supply chain. जो भी आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है, जो भी है, that will be affected. जो भी प्रोसेस है, there shall be integration of processes. The implementation of SCM needs the integration of processes from sources to manufacturing to distribution across the supply chain. That is why अब global जो भी है, आप यदि कहीं बाहर यूनिवर्सिटी वगैरह में अप्लाई करेंगे तो one of the questions they ask you is whether you will be able to work in a people from different cultural backgrounds.
तो ग्लोबल है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सभी लोग आपके ही बैकग्राउंड के होंगे, there will be other people with other backgrounds, so there has to be compatibility, तो प्रोसेस तो इंटीग्रेटेड होना चाहिए ना। कोई भी बैकग्राउंड है, आपका फोकस होना चाहिए कि कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का उसका डिमांड है दैट इज बीइंग फुलफिल्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे और नॉट। तो उतना इंडिविजुअलिटी पर फोकस नहीं है, इंडिविजुअल पार्टनर्स पर नहीं, ये टोटल फोकस है। कोऑपरेशन, ये सारे क्या है, समथिंग सम इंडिविजुअलिटी इज सप्रेस्ड, तभी कोऑपरेशन आ सकता है। The planning and operating implication in the 4 stages of supply chain integration is discussed below. पहला स्टेज क्या है, represents the baseline, जो क्या है आपके केस का baseline क्या है। The supply chain is a function of fragmented operation within the individual company and is characterized by stage inventories, independent and incompatible control system and procedures and functional segregation. हर एक का अलग अलग होगा, मगर इसको आप जो पार्टनर्स के अलग अलग होंगे, मगर यू हैव टू इंटीग्रेट इट, क्योंकि फाइनल जो आउटकम है दैट इज गोइंग टू अफेक्ट एवरीवन। तो पहले तो अपने ऑर्गेनाइजेशन पर आप इंटीग्रेशन कीजिए, फिर दूसरे से कीजिए, फाइनली द टोटल सप्लाई चेन इज इंटीग्रेटेड टुगेदर। वही चीज को एक्सप्लेन किया है कि पहले तो स्टार्ट करेंगे तो शायद हो सकता है उतना इंटीग्रेशन नहीं होगा, सबको अपने अपने काम करने का, बट देन यू हैव टू इंटीग्रेट इट अमंग देमसेल्फ, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाने के लिए यू हैव टू हैव अ इंटीग्रेशन, क्योंकि गोल तो सेम है सबका। फिर यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, बहुत सारे हैं, सप्लायर है, मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, कस्टमर है, तो इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड अमंग दीज partners, and then the total integration is there. Then partners to build and maintain long term relationship. It is not one time कि एक बार हो गया काम तो खत्म हो गया, ये तो चलता रहेगा ना। तो जो भी आपने बिल्ड किया है you have to keep it up. ये रिलेशनशिप इज अ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप, ये नहीं कि आज ये आपका सप्लायर है कल को दूसरा है। हाँ, ये भी नहीं है तो फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है, कोई ऐसा कारण हो गया कि उसे आपको हटाना पड़ा, दूसरे लेना पड़ा, तो बट ओवरऑल इतनी भी रिजिडिटी भी नहीं, उसको रख परसों उसको रख रहे हैं ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो it has to be a long-term relationship among all the members of the partners of the supply chain. ऐसे हम there is no business that is not part. हर एक बिजनेस किसी ना किसी सप्लाई चेन का पार्ट होता ही है, क्योंकि क्या हो रहा है, मेन तो यही है ना कि डिमांड क्या है कस्टमर का, उसको फुलफिल कर रहे हैं। उसको फुलफिल करने के लिए एक किसी का तो हाथ होता ही नहीं है, देयर आर सो मेनी पार्टनर्स इन दैट सप्लाई चेन। तो यू कैन नॉट से कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू हैव अ होलिस्टिक व्यू ऑफ द टोटल ऑपरेशन। खाली मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, केवल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, केवल सप्लायर्स नहीं है, रॉ मटेरियल के सप्लायर, इट इज द टोटलिटी। इन टोटलिटी यू हैव टू सी हाउ थिंग्स शुड मूव। तो इसीलिए फ्यूचर में इट शुड बी कंज्यूमर सेंट्रिक सप्लाई चेन, मैनेजिंग द सप्लाई चेन। क्या डायनामिक चेंजेस हो रहे हैं सप्लाई चेन में, उसको देखना है, ध्यान देना है। ये जैसे
नहीं, ये ट्रेडिशनल है, ये अब जिस पे ज्यादा फोकस हो रहा है, मैन्युफैक्चरर हो या रॉ मटेरियल हो या सप्लायर हो या दे आर ऑल फोकसिंग ऑन द कस्टमर। कस्टमर को क्या चाहिए, तो मैन्युफैक्चरर भी उसी तरह काम करेगा, रॉ मटेरियल भी उसी तरह सप्लाई होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी उस तरह होगा, सब और दूसरे भी सप्लायर्स जो भी है कंपोनेंट्स वगैरह जो भी कर रहा है, तो नाउ द फोकस इज ऑन कस्टमर। ट्रेडिशनली कि आपस में ही घूम रहे हैं हम, कस्टमर इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट, नो दे आर पार्ट ऑफ इट, नो डाउट, यहाँ भी इट इज पार्ट, but the focus of all these suppliers, manufacturer, raw material is on customer. ये जो है 7S है फ्रेमवर्क, मैकेंजी ने डेवलप किया था। ये है 7 शेयर्ड वैल्यूज, सिस्टम्स कैसे हैं, क्या स्टाइल है, क्या स्टाफ है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है, क्या स्ट्रेटजीज बनेंगे, क्या स्ट्रक्चर होगा, तो दिस इज अ 7 मॉडल डायग्राम। टुडे द सप्लाई चेन इज बेस्ड ऑन दिस was developed by McKinsey, but it is seen that it is the very valuable way of looking at a supply chain. जो 7 है, 3 7 और 4 हुआ ना, 7 7 वैल्यूज हैं, तो 3 को हार्ड कहते हैं और 4 को सॉफ्ट। हार्ड है कि उसको बहुत इजीली यू कैन डिफाइन इट, जैसे स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, क्या आपका स्ट्रेटेजी होगा, तो वो डिफाइन करना इजी है। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स क्या होंगे, रिपोर्टिंग लाइंस, कौन ऊपर रहेगा, कौन नीचे रहेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट होता है ना, जैसे सीईओ है, सीईओ के अंडर फंक्शनल एरियाज हैं, हर एक फंक्शनल एरिया के अंडर उसके स्टाफ है, थिंग्स लाइक दैट। जनरली इट इज अ ट्री टाइप ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, कौन किसको रिपोर्ट करता है, ये सारा formal processes and IT systems. So this is defining is easy, but the soft elements है, it is not, because ये ज्यादा intangible है, जिसको छू नहीं सकते आप बोल, मगर you have to build a कि these values are also taken care of. Shared values, ये सॉफ्ट है। कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर वैल्यू मस्ट बी enshrined in the core organizational value. It should become the culture and second nature of for people to act on anything related to customer and end customer at the highest priority. जैसे I remember मुझे किसी काम से एक बार एक डिपार्टमेंट जाना पड़ा। अब I was looking for someone, मुझे कुछ I did not know anyone. एक स्टूडेंट आया, he asked me कि मैडम क्या चाहिए आपको, तो इसका यह मतलब है कि ओवर देयर ई स्टूडेंट, वो भी चुपचाप अपना चला जाता, भाई हम उसे क्या जरूरत थी मुझसे पूछने का, मुझसे क्या काम था, बट ही आस्क्ड मी एंड ही टुक मी टू दैट पर्सन, आई फेल्ट नाइस। उसी तरह ये जो शेयर्ड वैल्यू नहीं होगा, जो भी है, जो भी पार्टनर्स हैं, वो वैल्यू को शेयर करें कि दे शुड नो कि कस्टमर इज फॉर एवरीवन, तो दैट फेलो मस्ट हैव, ये उस कल्चर को डेवलप किया गया होगा कि जो भी इस डिपार्टमेंट नया आता है, if he or she wants something, that has to be catered to. It gives, on the long run, it gives a very good result for the organization, the whole supply chain. खाली कह देने से नहीं होता है कि कंज्यूमर इज द किंग,
You have to work on it. और वो वैल्यू को कल्टिवेट करना पड़ेगा, not only in one partner but all the partners. Style. The leadership style adopted must fit the, ये सब सॉफ्ट है, इसको आप वेल डिफाइन नहीं कर सकते हैं. जैसे स्ट्रेटेजिक डिसीजन को आप लिख सकते हैं कि ये मेरा स्ट्रेटेजिक डिसीजन है, क्या आप आईटी यूज करेंगे, क्या क्या प्रोसेसेस यूज करेंगे, लिख सकते हैं. और ये सब कुछ that has to be defined, developed over the time. किस स्टाइल से आप काम करेंगे, आपकी लीडरशिप क्या है, क्या लोगों को पसंद आएगा, उस तरह से काम कर रहे हैं. स्टाफ, the employee and the capabilities are the assets of organization. People are the only active force in caring and serving the customer. जैसे कभी कभी क्या होता है, when we are interacting with a machine, अब वो तो बड़े स्ट्रक्चर्ड वे से काम करता है, आपका कोई प्रॉब्लम है उसको समझ में नहीं आया. जैसे शुरू में जब ये कंप्यूटराइज्ड बिलिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर गया था, मान लीजिए आपका 0 बिल आया, सोचे ये क्या जरूरत है, 0 बिल आया तो पेमेंट नहीं करेंगे, मगर वो आता रहेगा, तब तक आप उसको 0 रुपीस का पेमेंट नहीं करेंगे, वो नहीं स्टॉप करेगा. मगर wherever staffs are coming, so in a supply chain, everything should not be very mechanical. After all, you are dealing with human beings. तो आपके स्टाफ कितने केयरिंग है, कितने कस्टमर ओरिएंटेड है, that will matter a lot. उनकी क्या कैपेबिलिटीज है, क्या स्किल है, these things, the skill, the quality of the product, the level of customer satisfied rely on the skills of the workforce. आपके कस्टमर्स जो भी उनका डिमांड है, how beautifully they are fulfilling it, how highly satisfied your customers are, तो ये उनके स्किल पर डिपेंड करेगा. डॉक्टर के पास आप गए भाई, किसी डॉक्टर ने बड़े रूडली बिहेव किया तो नेचुरली यू आर डिससैटिस्फाइड. उसी बात को कोई अच्छे से समझा, यू आर मोर willing to understand it, understand the problem, what precautions you have to take, why this problem has arisen. ऐसा नहीं है, even our day-to-day life, these factors affect our behavior or the outcome. The second challenge is to take an whole supply network and manage it as an integrated entity. So I've been harping on this कि integrated entity है, एक नहीं है, ये अलग नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर अलग नहीं है, सप्लायर अलग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर अलग नहीं है, सब एक ही. That is why now this word सप्लाई चेन, ऐसा नहीं था. सप्लाई चेन मैनेजमेंट तो जब से सामान बन रहा है और बिजनेस चल रहा है, सप्लाई चेन तो आज इस पर ज्यादा फोकस है, बिकॉज वी हैव सीन कि ये इंटीग्रेशन है, सभी के एफर्ट से व्हाटएवर यू आर ट्राइंग टू अचीव कैन बी अचीव्ड. तो आज हम एक ऐसे प्लेस में वी कैन सी कि कॉम्प्लीमेंट्री जो उनके स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसीज हैं, दे शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. जैसे हमने कहा ना, फंक्शनल रिलेशनशिप होना चाहिए, डाई फंक्शनल नहीं. हम आपस में इतना लड़ने लगेंगे तो नेचुरली अपने कस्टमर को क्या सेटिस्फाई करेंगे. So this is to make your custom supply chain more customer centric. You have to see to it, but the hard ones as well as the soft ones. जो shared
वैल्यूज हैं, जो स्किल्स हैं, जो कॉम्पिटेंसीज हैं, एक्चुअली ऑल इसमें सब एस से कर दिया गया है, मगर all this have to be focused in such a way कि the customer is satisfied, the customer is getting what he or she wants. तभी we can make the supply chain successful and long lasting. ये मोमेंटम यदि बिल्ड हो जाएगा तभी कोई भी नया चैलेंज होगा तो we can take it. As I told you, any risk, it is more than one people handling it, then they can discuss it and come to certain conclusion. शायद आपके पास वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, किसी और से बात करेंगे तो मिल जाएगा. That is why it is so many times not to keep bottled up anyway. तो isolated वाटर टाइप कंपार्टमेंट में बैठने से काम नहीं चलेगा कि हाँ हमने में तो बहुत अच्छा कर दिया काम, बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है. यू हैव टू हैव अ लिंकेज विथ ईच एंड एवरी पार्टनर. कोऑपरेशन है, इंटरडिपेंडेंसी है, शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, शेयरिंग ऑफ पॉलिसी है. ऑल दीज थिंग्स विल लीड टू अ मच बेटर सप्लाई चेन. जैसे जैसे ये ज्यादा काम, जैसे एक आप छोटे से जगह पर काम कर रहे हैं तो naturally the supply chain is not that complex, but if you are working on a national level or international level, the supply chain, so these values, these strategies, or these 7 say S, they make a significant impact on the outcome. Manager must keep a vigilant eye on the trade-off between risk and the cost of building a reserve to mitigate it. जैसे हमने कहा इन्वेंट्री में भी क्या है, हमें ये देखना है कि इतना ज्यादा भी हम सामान नहीं रखें कि वेस्ट जाएगा, इतना पैसा हमारा वेस्ट गया, और इतना कम भी नहीं रखें कि हमारा प्रोडक्शन अफेक्टेड हो जाए, हमारे कस्टमर चले जाए, उनको सामान नहीं मिले. तो इसी तरह है कि कोई भी रिस्क आ गया तो रिस्क के लिए को कैसे हैंडल करेंगे, हम कुछ उसके लिए रिजर्व में रखें कि जब हमें जरूरत पड़े तो हम अपने रिजर्व से यूज कर सकें. अब रिजर्व को इतना बड़ा ना बना दे कि उसी को रखने में हमारा सारा पैसा, ज्यादा एनर्जी निकल जाए. तो एक ट्रेड ऑफ होना चाहिए, मिनिमम जो ऑप्टिमम लेवल हो जिससे दोनों का काम चलता रहे. और इसके लिए नेचुरली क्योंकि दिस इज अ चेन, तो शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क, द इंफॉर्मेशन अबाउट दोज रिस्क, so what type of risk can happen in the future, this is very important. अब क्योंकि दिस इज समथिंग डायनामिक, ये नहीं है कि आज आपने एक सप्लाई चेन बना लिया तो कल जो जैसा आज काम करा वैसे ही कल भी कर, कुछ और चेंजेस आएंगे, नए टेक्नोलॉजी आ जाएंगे, लोगों के नए आइडियाज आ जाएंगे. तो यू हैव टू कीप एन आई ऑन इट and see you also evolve along these changes. So your supply chain should be dynamic, it should not be static कि एक बार हमने सोच लिया इसको ये काम को ऐसे ऐसे करना, बस वैसे ही करना क्योंकि रिजल्ट अच्छा दे रहा है. हो सकता है कल को लोगों के डिमांड चेंज हो जाए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो जाए, तो यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली. जैसे पहले जब हम लोग as I already told you कि जब हम लोग हॉस्टल चले गए तो हॉस्टल एक बार गए तो बहुत होगा जल्दी, तो उस समय फोन भी मिलना बहुत मुश्किल था और इट वाज नॉट इजीली अवेलेबल. जाके आप कहीं से फोन करेंगे, उसको लाइन वाले लॉन्ग डिस्टेंस है तो टाइम भी बहुत लगता था, बैठिए तब जाके कनेक्शन मिलता था. तो तब भी ये सर्वाइव तो क्या किए, ऐसा नहीं था कि नहीं सर्वाइव किए, मगर द नीड और you have to keep on changing accordingly. जैसे जैसे need आएगा, technology आएगी, you have to keep on changing yourself. So dynamic of supply chain also has to change accordingly.
जैसे स्ट्रक्चरल डिमांड्स डायनेमिक्स हो सकते हैं ना, कि कभी डिमांड ज्यादा हो, कभी कम हो, कभी मिसमैच हो गया, बैकलॉग हो गया, अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स हो गया. तो यू हैव टू कीप ऑन looking at all these things and see how these are being managed in your supply chain. जैसे ठीक है, आज स्पेशलाइजेशन का जमाना है, स्पेशलाइजेशन में भी, मगर इफ देयर इज नॉट, जैसे आप एक डॉक्टर, आप बीमार पड़े हैं, आप डॉक्टर के पास गए, उस स्पेशलिस्ट के पास गए, और केवल उस स्पेशलिस्ट से तो कम नहीं, देयर हैज टू बी अ कोऑर्डिनेशन अमंग दोस स्पेशलिस्ट्स आल्सो, क्योंकि योर प्रॉब्लम कैन बी अफेक्टेड बाय many other reasons apart from one specialist. Similarly in a supply chain, how the problem has arisen. तो आप यदि केवल यही कहें कि नहीं तो मैं तो इसी काम में स्पेशलाइज्ड हूँ, मुझे उससे कुछ मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए. सप्लाई चेन में इट इज अ इंटीग्रेटेड एफर्ट, टोटल वेल-बीइंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एक मटेरियल, प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, which is from the initial stage, it is going to the final stage, it is going through so many processes, so many different partners. तो specialized है, ठीक है, आप उस particular area, but then you can talk to others. The coordination has to be there, cooperation has to be, you have to understand कि ऐसा क्यों हुआ. तो watertight compartment में बैठने से नहीं चलेगा. It has to be a free flow of information and knowledge sharing. अब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जैसे आप क्लाइमेट चेंज हुआ तो आपका जो सप्लाई चेन, मान लें आप किसी ऐसे प्रोग्राम काम में है जहां environment is being affected, it is affecting so many, you have to be concerned about it. आप अपने प्रॉफिट से केवल काम नहीं ले सकते हैं, you have to be open and accordingly you make changes. या तो कोई सब्स्टिट्यूट यूज कीजिए, या उस जो whatever depletion you have done, whatever wrong you have done to the environment, you should do something to see that it is rectified, modified, mitigated. So nobody over here is working in isolation. We should always understand that we are a part of a bigger system. वो इंटीग्रेशन, कोऑपरेशन से सुलझ सका है, नहीं तो डायनेमिक्स हो या टेक्नोलॉजिकल डायनेमिक्स हो, टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रहा है, सप्लाई चेन इज मोर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, इट इज इन. जैसे आज फॉर एग्जांपल, पहले तो केवल फ्लिपकार्ट था, इट वाज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय दीस टू ब्रदर्स, ब्रदर्स नहीं, पार्टनर्स, बंसल्स. दे कुड नॉट कीप. बाद में उनका इतना कंपटीशन हो गया इससे, Amazon when it came, and Amazon की टेक्नोलॉजी, the way of working was, they were facing up till 2015, so they were doing very well, but 15 के बाद it started fluctuating. Their growth was being affected by the competition which Amazon was giving them. Finally it was taken by Walmart. ऐसा तो नहीं था ना कि जो लोग उसे एक स्क्रैप से स्टार्ट किए फ्लिपकार्ट को, वो ऐसे ही बेच दें किसी को, भाई इट वाज देयर बेबी. बट इतना टफ कंपटीशन हो गया कि व्हाई, बिकॉज Amazon is using lot of technology to make its supply chain
more flexible, more user friendly. तो अभी जो फ्लिपकार्ट हम लोग यूज कर रहे हैं तो एक्चुअली इट इज वॉलमार्ट, वो थोड़ा पुराना बंसल्स का फ्लिपकार्ट है, इट इज नाउ फ्लिपकार्ट वॉलमार्ट, हालांकि वर्ड तो फ्लिपकार्ट ही यूज करते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल डायनेमिक्स जो भी है, वी हैव टू कीप ऑन इनकॉर्पोरेटिंग इन आवर सप्लाई चेन। So the final ultimate, so as I told you, it is customer centric. So you have to satisfy the customers. अब जैसे आपको यदि आपके सप्लायर्स वो टेक्नोलॉजी को नहीं यूज कर पा रहे, नहीं दे पा रहे, तो यू विल बी फोर्स्ड टू चेंज दो सप्लायर्स, क्योंकि बिना आजकल तो बिना टेक्नोलॉजी का काम हो ही नहीं सकता है। कितने भी सिंसियर हैं, कितने भी अच्छे हैं, if they are not using the technology, the latest technology, तो the quality of the material, the delivery time of the material, all these will be affected. Then, so you have structural dynamics, you have technological dynamics, then you have relationship dynamics. So how you maintain that relationship? How you maintain your relationship not only internally but with also external partners. So this is the reason how you can become customer centric. क्योंकि सभी लोग यदि कस्टमर को अपने दिमाग में रख के और उसके लिए काम करें, सेम पर्पस के लिए काम करें, तो देयर रिलेशनशिप अमंग देमसेल्व्स विल बी गुड एंड दे विल बी वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल। तो अभी आई हैव रिटन दिस एज फ्यूचर, बट दिस इज ऑलरेडी इवॉल्विंग देयर, दैट वी आर फोकसिंग ऑन structural dynamics, we are focusing on technological dynamics, we are focusing on relational dynamics. ये तीनों dynamics is playing a very vital role in making our supply chain management in such a way that the customer is the actual key. उसी के satisfaction के लिए every partner is working. Yeah, that was really fantastic session. So I would like to get the feedback because 2 days some guest participants were also there from the industry. So Ugrasen ji and Mohit, Manoj, पहले आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या exactly मिला आपको 2 दिनों में, क्या different मिला या क्या रिवाइज हुआ? मनोज आप बोलना चाहेंगे या मोहित जी बोलना चाहेंगे आप? प्लीज ओपन योर कैमरा, आप थोड़ा हम लोग बातचीत कर लेते हैं। मनोज या मोहित? यस सर। हाँ जी, प्लीज ओपन योर कैमरा सर, आप लोग कॉर्पोरेट के लोग हैं, आप बात कर सकते हैं, ठीक है? तो इतनी मेहनत की मैंने, शी इज वन ऑफ द रिनाउंड प्रोफेसर इन इंडिया, तो एक स्लाइड्स को बनाने में कितनी मेहनत लगती है, आप तक आने तक कितना प्रोसेसेस होता है, क्या ऑपरेशनल टाइम लगता है, आप लोग ऑपरेशन मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, सर्टेनली दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। तो बताएं मनोज की क्या सीखने को मिला और कैसा लगा आपको, क्या रिवाइज हुआ? मनोज। सर जो, हाँ जी सर, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, बताएं। हाँ बोले, सुनाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है, बोले मनोज। अच्छा मनोज, ओके मोहित आप शुरू कर सकते हैं, मनोज जी लगता है कहीं बिजी हैं। तो मोहित आपको कैसा लगा और क्या सीखने को मिला और क्या डिफरेंट लगा? सर एक्चुअली अभी करंट टाइम में हम वेयर हाउस से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, जो हमारी प्रोफाइल है, एक्चुअली आई एम वर्किंग। तो जो सप्लाई चेन का जो मैम ने बताया, जो कि आज का सेशन था, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और दोनों सेशन कल और आज हमने दोनों को देखा, तो जो चीजें मैम बता रही थी एक्चुअली हम उसी टाइप में काम कर रहे हैं, लेकिन इससे एक सीखने को चीज मिली कि आप टाइम को कैसे बचा सकते हैं। किसी काम को जो हम कर रहे हैं, करंटली वर्क कर रहे हैं, उसमें टाइम को हम कैसे शेप कर सकते हैं, उस टाइम में हम और कितना एक्स्ट्रा एफर्ट कर सकते हैं। दूसरा
जो ये कि आप मिलके काम करते हैं एक ग्रुप के साथ, एक कस्टमर को लेकर, ये चीजें रियली बड़ी ही अच्छी है और इसके रिजल्ट भी बेसिकली आने वाले अच्छे हैं। और बेसिकली क्या होता है कि कई बार ना मैनेजमेंट क्या है, एक लोग बोलते हैं मैनेजमेंट एक डिग्री है, मैनेजमेंट डिग्री नहीं है, मैनेजमेंट एक स्किल है। yes. और कई बार हमें सिखाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया, आपको जॉब मिल गई, अब आपके पास समय ही नहीं है कि आप जाके 2 साल पढ़ो। तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि आप अपना सैटरडे संडे अगर 2 घंटे भी इन्वेस्ट किया आपने, तो आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज हो गई, और हो सकता है कि आगे और भी चीजें सीखें तो और भी चीजें रिवाइज हो और इफिशिएंसी आपकी बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाए, आपकी मैनेजरियल कैपेसिटी बढ़ जाए। जी बिल्कुल। तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। जब कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा तो कंपनी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता एक्सेप्ट कि आपको प्रमोट कर दे, क्योंकि उसको भी तो पाइपलाइन में लीडर चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आपसे 10 गुना ज्यादा कंपनी परेशान रहती है एक लीडर खोजने में, पता है आपको? एक जॉब चली जाती है किसी बंदे की तो आपसे 10 गुना ज्यादा परेशान आपका एचआर मैनेजर होता है कि ये बंदा मिलेगा कैसे, रिप्लेस कैसे। एक वैकेंट पोजीशन को भरने के लिए कितने सारे इंटरव्यू, ये सारी चीजें इसीलिए होती हैं कि एक अच्छा लीडर, एक अच्छा डिपार्टमेंट इंचार्ज मैनेजर, ये सारी चीजें। और लोग आते हैं, उनके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लुक है, मिसिंग क्या रहता है? स्किल और एटीट्यूड। भरोसा खोजते हैं कि एक आदमी भरोसे के लायक है कि नहीं है। जस्ट लाइक ए मैरिज में आप क्या खोजते हो? फिटमेंट खोजते हो, सुटेबिलिटी, कि ये हमारे परिवार में एडजस्ट करेगा या करेगी कि नहीं। उसी तरीके से जॉब भी एक एम्प्लॉइज का मैरिज ही होता है, जहां पे वो एम्प्लॉय ये देखता है कि मैं सुकून से रह सकता हूं कि नहीं, बॉस मेरा ठीक है कि नहीं। बॉस ये देखता है कि मैं इस एम्प्लॉय के साथ काम करूं, ये प्रोडक्टिव है, कॉम्पिटिटिव है, अच्छा है या नहीं है। ये सब चीजें मैनेजमेंट और ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर होता है, बिल्कुल होता है। ट्रस्ट फैक्टर बिल्कुल होता है कि आपको अगर एक डिपार्टमेंट, हम ही को अगर एक डिपार्टमेंट दिया गया है तो हमसे वो हमारा सीनियर या हमारा बॉस उम्मीद यही करता है कि हमने जो इनको वर्क दिया है वो प्रॉपर एक जो हमारी कस्टमर डिमांड है उसके अकॉर्डिंग काम हो और करे, और दूसरी जो है चीजें रुके ना, रुकावट ना आए बीच में, किसी तरह का प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, ठीक है ना। तो इसमें ट्रस्ट तो है, ट्रस्ट नहीं लेगा। अभी मान लो बॉस हमारा बैंकॉक चला गया, आउट ऑफ स्टेशन कहीं चला गया, तो क्या है, ट्रस्ट पे ही छोड़ के जाएगा ना सारी चीजों को, वो तो नहीं देखेगा प्रॉपर्ली कि हाँ क्या चल रहा है। तो ट्रस्ट तो है। चलिए बहुत अच्छा है। एंड आई होप कि आगे भी आपकी लर्निंग जारी रहे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। हाँ मनोज जी, आप बताएं आपकी लर्निंग क्या रही 2 दिनों में? सर जो आज का सेशन था सप्लाई एंड मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ, उसके अंदर जो मतलब था सप्लाई का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग उसमें किस तरीके से की जाती है, फैसिलिटी लोकेशन का और डिस्ट्रीब्यूशन का जो है इसके अंदर लेआउट प्लानिंग है, सप्लाई चेन और बेटर एफिशिएंसी को मतलब कैसे अपने आप को इम्प्रूव और कर सकते हैं इसके अंदर, और किसी भी प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसके प्रायर क्या क्या स्टेजेस होती है। जी हाँ जी, बहुत अच्छा। अभी देखेंगे आप लोगों को मैंने मतलब पूरा डिटेल भी भेजा हुआ है कि जब ये अगले 3-4 महीनों में उन सब चीजों को आप जानेंगे तो सडनली आपको लगेगा कि मैं कर क्या रहा था। काम वही है, टाइम वही है, लेकिन अब इफिशियंसी आपने बढ़ा दी, सोच का दायरा बढ़ गया, तो अब सक्सेस आराम से मिलना शुरू हो जाएगा। तो कई बार हमें छोटा सा गाइडेंस, छोटी सी नॉलेज, छोटा सा इंफॉर्मेशन, छोटा सा अपना इन्वेस्टमेंट हमें बहुत बिल्कुल लेके चला जाता है। हाँ, काम तो सभी करते हैं जी, बट बहुत से जैसे कहते हैं ना एक मतलब स्मार्ट वर्क, तो उस तरीके से काम करना है कि स्मार्ट हो, ना कि दिन भर आप लगे रहो और शाम एंड ऑफ द डे फिर वही आपका कोई सॉल्यूशन ना मिले या प्रॉब्लम वैसी की वैसी रहे, तो वो चीज नहीं करनी और स्मार्ट वर्क करना है बेसिकली। वेरी गुड, थैंक यू। या कुमार गौरव साहब, how was the experience? Kumar Gaurav, are you able to speak? Yes sir. Good evening sir. कुमार गौरव साहब बताएं अपना फीडबैक। Am I audible sir? अपना फीडबैक बताएं 2 दिनों का। Yes sir, ये हाँ बिल्कुल ऑडिबल है, आप बोले।
तो सर एक्चुअली मेरा फील्ड ये है ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो लर्न करने के लिए जो मैंने ज्वाइन किया सर। ये हाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें अचानक रिकॉल हो गई होंगी, याद आ गया होगा। जी 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 एक्चुअली ये भी करना था, वो भी करना था। यस सर, एक्चुअली मैम ने जो इलोबरेट किया इतनी अच्छी तरह से सर कि डे बाय डे जो सोचने का जो हमारा दायरा है वो चेंज हो रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे किसी भी पर्सपेक्टिव को, जैसे मतलब एक नजरिए से देखना, पहले जो कुछ अलग था, वो एक विजन जो है वो चेंज हो रहा है डे बाय डे। राइट। एक्चुअली मैम बहुत रिसर्च ओरिएंटेड चीजें पढ़ाती हैं, और कई बार मुझे ईर्ष्या होती है आप लोगों से कि आपके पास जो है कि मतलब पढ़ने का टाइम है, और मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, तो इसलिए जब मौका मिलता है तो मैं भी थोड़ा टाइम मैडम को सुन लेता हूँ। Okay, so thank you very much sir for giving me such a great आप लोग बहुत लकी हैं कि मैम इतना रिसर्च करके लेके आती हैं। जी बिल्कुल सर, हम लोग बड़े लकी हैं जो हमें मैम को सुनने को मिला। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, आगे भी मिलता रहेगा। हाँ, शिवांग पाठक साहब, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? 2 दिनों का अनुभव कैसा रहा? इवन यू आर फ्रॉम एडमिन। हाँ सर, ये मतलब मेरे लिए तो पूरा नया है सब्जेक्ट। जी, बट आपसे कोरिलेटेड है, अंदरूनी तौर पे आपसे जुड़ा हुआ है। मैं देखता हूँ काफी बार एससीएम के बंदे बहुत स्ट्रेस में रहते, सभी वो आते हैं, बात करते हैं, तो ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा उनको हेल्प करने में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। या प्रवीण साहब, how was your experience and what is your feedback? प्रवीण जी। हाँ सर। यस सर। हाँ, बोले। Actually, all these things are regularly in my practice, but structured way में मैम ने जिस तरीके से ये डिफाइन मतलब हमको टीच किया, तो डेफिनेटली ये हेल्पफुल है। और हाउ टू अंडरस्टैंड द कस्टमर गोल एंड वर्क अकॉर्डिंगली, दिस इज अ बिजनेस में ये एक लाइन बहुत ही। आप अपना कैमरा बंद कर ले। हाँ, आप अपना कैमरा बंद कर ले, मेरे ख्याल से साउंड कम आ रही है बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। हाँ, आप बोले, कैमरा के बिना बोले। कस्टमर डिमांड या कस्टमर वॉइस इज द मेन फैक्टर इन एवरी बिजनेस। तो ये समझ के ही हमको चलना पड़ेगा, तभी हम कस्टमर को या अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। डेफिनेटली ये मैम ने बहुत अच्छे से इसको पूरे सेशन में बहुत अच्छे से बताया, और वो यूजफुल रहे सभी के लिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करना केवल सेल्समैन की जिम्मेदारी नहीं है, नहीं, सप्लाई चेन की भी उतनी जिम्मेदारी है जितने ये पूरा जो टीम है उसको, मतलब जो हम टीम वर्क बोलते हैं, जो मैम ने बताया, टीम वर्क अगर नहीं है तो उसको नहीं कर सकते। और कोई भी प्रॉब्लम जैसे मैम ने बताया, तो प्रॉब्लम आती है तो हम आप शेयर मतलब उसका जो क्रेडिट है वो अकेले नहीं ले सकते। राइट। तो आगे टीम वर्क है, टीम वर्क के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। कल मैं एक वीडियो देख रहा था सर, एक वीडियो था कपिल देव साहब का। हाँ। उनका कहना था कि एक बैट्समैन जो है वो कहता है कि मैंने 100 मारा, ये मैंने इतने रिकॉर्ड बनाए। उसके साथ दौड़ने के लिए दूसरा था, तभी उसने वो 100 बनाए। सही बात है। या बॉलर ने विकेट लिया है तो कैच पकड़ने वाला है। मतलब ये है कि टीम वर्क होना चाहिए। विदाउट टीम वर्क वी आर नॉट कंप्लीट एनी गोल। एक्सीलेंट, वेरी गुड एग्जांपल। तो बहुत अच्छा एग्जांपल था। या हर्षिता, कैन यू गिव योर फीडबैक? बोल सकती हैं? यस सर। हाँ, बोलिए। So actually experience was very good. Currently I am working with production or manufacturing excellence. So the basic concepts are, I am already working on that. But the ma'am said बहुत ही क्लियर वे में उन्होंने सब कुछ समझाया है, और सब कुछ तो थोड़ा आगे हमारे ये सब चीजें क्लियर वे में हमारे काम आएंगी। And have a broader perspective, and you can also introduce your own vision. Hello, yes sir. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, मेरी आवाज आ रही है ना? Yes sir. Okay, no problem. Thank you. Yeah, Anjali, would you like to share your feedback as well? And Sakshi?
Yeah, Yes, sir. Anjali, are you there? Yeah. Yes, sir. सर मेरी आवाज आ रही है? Share your learning. हाँ बिल्कुल आ रही है. Share your learning, Anjali. Yes, the session was great. बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं. तो प्रैक्टिकल नॉलेज तो मुझे नहीं है, बट होपफुली इन फ्यूचर मुझे बहुत सारी चीजों में काम आएंगी. तो आई एम सो मच थैंकफुल टू द मैम एंड यू आल्सो. थैंक यू सो मच. Thank you very much. You should be thankful to ma'am only because she has done all the great research work, and the way I saw the kind of hard work she is doing at this age, it's commendable. मैं तो सोच भी नहीं सकता. So it's she is bringing all the मतलब जैसे ना मोती चुन चुन के 50 किताब पढ़ती हैं वो, तब जाके एक स्लाइड्स बनाती हैं और तब जाके लेके आती हैं. तो we are lucky कि we have मैम का जितना but your effort is also commendable, sir. You are also पाठक साहब providing a great मैम का platform. जितना एक्सपीरियंस है उतना कई लोगों का एज भी नहीं होगा शायद. Definitely right. Right. अच्छा बोला आपने. साक्षी, what is your feedback? Yes sir, हमें भी बहुत अच्छा लगा आज का क्लास. 2 दिन का जब जो भी था सर, हमें भी ऐसी प्रैक्टिकल नॉलेज तो कोई है नहीं. जैसे अंजलि ने बोला सारा कुछ न्यू ही हमने पढ़ा, लेकिन तब भी मैम ने जो भी हमें पढ़ाया हमें समझ में भी आया अच्छे से. और ये कोर्स भी बहुत अच्छा है. हमें ऐसा लग रहा है कि आगे जाके हेल्प करेगा ये हमको. राइट. मैनेजमेंट ऐसा है कि आपकी रियल लाइफ से जब आप ये कनेक्ट करोगे ना, इवन ऑपरेशंस, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो. रियल लाइफ की, डेली रूटीन की लाइफ में आप ऑपरेशन मैनेजमेंट करते हो, लेकिन हम कभी उसको सब्जी लाना, मान लीजिए कि अचानक सब्जी लाना है, अचानक कोई रिलेटिव को जाके रेलवे स्टेशन से पिक करना है और अचानक बच्चे को जो है कि आपको स्कूल ड्रॉप करना. तो जस्ट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड देन यू विल रियलाइज दैट ऑल द थिंग्स आर हाउ इट कैन हैपन. तो ये अभी और चलेगा एंड मे बी वी विल टॉक लिटिल बिट मोर. सो थैंक यू फॉर स्पेशली प्रवीण जी कि उन्होंने अपने टीम को भी एक्सटेंड किया, like Manoj and Mohit and other people. तो we will keep continuing कि हमारा उद्देश्य ये है कि लर्निंग को बहुत ब्रॉडर किया जाए. जो लर्निंग आप कर रहे हैं वो तो कर ही रहे थे, बाकी 2 लोग और आ गए, 10 लोग और आ गए, तो एटलीस्ट उनकी भी लर्निंग बन गई. हो सकता है उससे इनकी लाइफ में थोड़ा बहुत 1% फर्क पड़ जाए, तो वो दे विल थैंकफुल टू यू. राइट. ये भी एक अच्छी चीज होगी और इससे ह्यूमिलिटी बढ़ेगी. इससे आप दूसरे के प्रति संवेदनशील होंगे कि हमारा नॉलेज तो बढ़ ही रहा था, चलो हमने दूसरे का भी थोड़ा सा वैल्यू एडिशन कर दिया. तो इट वाज रियली गुड. आई थिंक मैम इज देयर. तो विद दिस थैंक यू वेरी मच मैम, एंड वी विल कनेक्ट अगेन द नेक्स्ट सैटरडे एंड संडे. थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी.